Hi, I am Luv Saxena. I scored 99.98 percentile in CAT 2016 and went on to do my MBA from IIM Bangalore. Currently, I'm working as head of category in a company called Pocket FM. It's a Series G company. The CAT journey started off as a very interesting journey for me because I was already always scoring really well in my school life. I got motivated कि यार मुझे 11-12 में JEE attempt करना है and I have to go and pursue my engineering from one of the IITs. अब ये IIT रुड़की were those 4 years जहाँ पे I sort of discovered myself कि मेरा असली personality क्या है. इसलिए वो 4 years में academics एक ऐसी चीज़ थी जो थोड़ा सा बैक सीट पे आ गई and I started doing things beyond academics which were and इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जिसको लोग बहुत productive नहीं मानते जैसे ग्रुप्स में मतलब we used to go and participate in e-games. हम Age of Empires, Counter-Strike वगैरह खेलते थे. 2014 was perhaps one of the worst periods for let's say placements from the IITs. तो 2014 में ख़त्म हुआ. I went on to let's say pursue a job in a company called Cisco and that's where I realized कि बहुत सारी companies इंडिया में आके बहुत smart लोगों को employ करती हैं in jobs which become back-end let's say offices of a lot of कंपनी फॉर इंस्टेंस सिस्को का जो हम जिस ऑफिस में काम करते थे इट वाज वेरी फार फ्रॉम लेट्स से द मेन स्ट्रीम वर्क दैट सिस्को वुड हैव बीन डूइंग ग्लोबली राइट. तो यहाँ पे मेरा वो मोटिवेशन आया कि आई थिंक मतलब मे बी द पाथ दैट आई हैव चोजन इज नॉट द पाथ दैट विल अल्टीमेटली लीड ऑन टू समथिंग रियली बिग एंड विच वॉज अगेन माई एस्पिरेशन राइट. तो मैंने यहीं इसी पॉइंट में डिसाइड किया कि आई नीड टू गो मे बी रीस्टार्ट माई एकेडमिक जर्नी. And that's why I decided to write this exam called CAT and eventually pursue my MBA from IIM Bangalore. तो मैंने अब decide कर ही लिया था कि अब मुझे CAT exam के लिए appear करना है. So this was my second let's say tryst with a competitive exam right. मैंने already IIT JEE दिया था. वहाँ से मतलब मेरी ना बहुत सारी learnings थी. जैसे during my JEE days I knew that I could have done a lot of things very differently. For instance at the end of day ये हम एक exam के लिए appear कर रहे हैं right. कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब अच्छा है पीपल शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स राइट बट एट द एंड ऑफ डे द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज कि वो जो एग्जाम जिसके लिए हम अपीयर कर रहे हैं डू आई रियली अंडरस्टैंड वॉट इज द पर्पज ऑफ दैट एग्जाम एंड डू आई हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी डू आई हैव अ ग्रेट प्लान ए ग्रेट प्लान बी टू अपीयर एंड टू लेट्स रियली क्रैक दैट एग्जाम. अब जब मेरा सेकेंड टाइम ये जर्नी शुरू हुआ आई न्यू कि आई कैन नॉट रियली मेक दैट मिस्टेक. तो आई स्टार्टेड बाय रियली अंडरस्टैंडिंग कि यार ये कैट एग्जाम क्या है. Okay, at the end of the day, it's about 3 sections, right? VA, LRDI, and Quant. I knew कि okay, there are 100 questions that I need to solve. अच्छा इसमें मेरे अब strengths क्या हैं, right? My strength was that I was good at mathematics, right? I have always been very quick to solve a lot of questions. Calculation से मुझे कभी issue नहीं होता था, तो I knew कि maybe 50-60% of the जो paper है, वो मेरा strength है and VARC मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ रीडर बचपन से. मैं बहुत सारे लिटरेरी फिक्शंस पढ़ता था बचपन में. तो आई न्यू कि VARC विद अ लिटिल प्रैक्टिस इज अगेन वन सेक्शन दैट आई कैन लेट्स से वर्क ऑन एंड देन मे बी कॉन्कर इवेंचुअली. तो मैंने शुरू जब किया मैंने एक ऐसे ही मॉक एग्जाम दे दिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज माई बेस लाइन इज. सम पर्सन वुड स्कोर लेट्स से 80 out of 100 right without any preparation. Then there would be some people who would be at 60. But the thing to note is कि each and every person with the right strategy, with the right preparation, right, can get that 99.9 plus वाला score. And second was कि मुझे ये भी पता था कि since I was preparing for this exam with my job, right, so therefore I'll have very less time to maybe prepare and spend दो sections पे primarily काम करना है. मेरे पास जो भी time है I have to distribute on these 2 sections first. And then the second thing is कि मुझे मे बी हर वीक एक मॉक एग्जाम लिखना है सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मेरा बेस लाइन एक्स था व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. ये एक्स को मैं कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा ये समझने के लिए एवरी वीक मुझे एक मॉक एग्जाम देना है टू बेसिकली नो कि मुझे कहाँ पे नेक्स्ट वीक मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. 5.5 months का मेरा प्रिपरेशन था. तो इवेंचुअली मेरा स्कोर आ गया था कैट में. आई वुड हैव डन अ फ्यू थिंग्स रियली डिफरेंटली. एक चीज़ ये होता है कि हम जब भी मॉक्स लिखते हैं राइट बिकॉज मैंने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट सीरीज लिए हुए थे. नाउ ऐसा होगा कि एट टाइम्स यू कीप ऑन स्कोरिंग रियली वेल इन वेरियस मॉक एग्जाम्स
लेकिन बीच में ना एक दो ऐसे मॉक्स आते हैं जब where your scores just tank, right, for whatever reason. Is at this point of time, it's very important for, let's say, a person to not get hopeless with that score, right? Because it's just, see, at the end of the day, what matters is कि आप consistently क्या score कर रहे हैं. तो वो एक आध बीच में जो एग्जाम आता है ना, it should not really affect you that much. You can just take that as a learning opportunity. आप समझो कि हो सकता है वो जिस तरीके से मॉक में वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो थोड़े से मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में थे या फिर स्क्यूड थे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसको मे बी वो टॉपिक को दोबारा देख लो रादर देन लेट्स गेटिंग वेरी डिसहार्टेंड विद पर्टिकुलर टेस्ट. सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू मे बी चेंज इन माई preparation journey is one, not get very, let's say, attached to different type of questions that I'm solving, right, during this mock wala period. See, at the end of the day, mocks are just there to, let's say, test certain concepts and for you to, let's say, better your strategy. But on the CAT day, right, the questions जो आप फेस करेंगे ना वो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपने जैसे भी स्ट्रैटेजी बनाया है, जैसे प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा अजाइल रहिए एग्जाम में, बट जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. कैट के एक दिन पहले आई यूज टू डू ऑल द नॉर्मल थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट वन थिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट कैट और MBA, right, just means to a particular end and there are a lot of, let's say, pathways that can lead to that end. So just don't let this particular exam really weigh on your mind. मेरा दिन वैसे शुरू हुआ, मैंने एकदम नॉर्मली किया. एक दिन पहले आई डिड नॉट स्टडी मच, नॉर्मल चीज़ें करी. इनफैक्ट मैं ऑफिस भी गया, शाम को आके बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें करी एंड देन आई कुड सी अ लॉट ऑफ फेसेस जो बहुत सारे लोग बुक्स लेके आए हुए थे एंड दे वर ट्राइंग टू, लेट्स से, रिवाइज लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम. बट आई अवॉइडेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड आई थिंक दैट इट्स बेटर टू नॉट टेक स्ट्रेस एट द लास्ट मोमेंट. अब मेरे साथ ऑन द एग्ज़ाम डे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हुई. जैसे मेरा जब एग्ज़ाम मैं जाके बैठा सेंटर पे और मेरा जब RC सेक्शन शुरू हुआ, दैट्स व्हेन माय डिस्प्ले, द एग्ज़ाम डिस्प्ले वेंट ऑफ एंड इट रिमेन्ड ऑफ फॉर अबाउट 5 to 7 minutes एंड this was that moment when I should have gotten that anxiety attack, right? But I knew कि यार ये हो गया है, 5-7 minutes जा चुके हैं. I should not lose my heart. वो 5-7 minutes मेरे गए, but I knew that I still have 53 minutes. जो भी मतलब चीज़ मेरी शुरू हुई थी वो एकदम मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी नहीं थी. I had given, let's say, probably 100-120 marks, right? उन सब में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं एग्ज़ाम देने बैठा और मेरा सिस्टम ही ऑन नहीं हुआ, राइट? जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी मैंने वो ये इम्प्लीमेंट करी. LRDI सेक्शन आया एंड देन क्वांट तक आते आते आई वॉज रियली कंफर्टेबल अगैन. तो आई न्यू कि आई स्टिल हैव टाइम टू इम्प्लीमेंट माई स्ट्रैटेजी एंड माई स्ट्रैटेजी वेंट लाइक दिस कि मैं फर्स्ट 5 to 10 minutes में स्पेंड करता था टू अंडरस्टैंड कि जो RCs आए हैं वो किस डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, वेदर दोज जो RCs हैं उनकी लैंग्वेज मैं ईजिली समझ पा रहा हूँ या फिर आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दोज लैंग्वेजेस. एक बार जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो, नेवर रियली जंप ऑन द ऑप्शंस. आउट ऑफ द RC आप पहले उसका आंसर सोचो कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है एंड देन यू लुक एट द ऑप्शंस. अगर कोई ना कोई ऑप्शन आपकी एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एल्स यू लीव इट. एंड मेरा हमेशा से मानना यही था कि यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू फील 90-95% sure about in BARC. So I always had the strategy कि I need to attempt the questions with very high accuracy. BARC ख़त्म हो गया section. उसके बाद LRDI में again I had a very similar strategy. मैं पहले first 10 minutes I used to spend understanding each and every set. उसमें भी मेरे कुछ strengths होते थे. I knew कि the DI वाले जो sets होते हैं उनको I can attempt with ease because I was generally very fast in calculations. Quant वाला section आया. This is the section where I knew I was strongest at. मैंने first तो मैं generally मेरा strategy होता था कि मैं quant में पहले questions को मैं attempt करते हुए जाता था. जिस भी question में मुझे थोड़ा सा भी problem होता था या maybe मुझे लगता था कि यार ये half minute या 1 minute से ज़्यादा लग जाएगा इस question में, I used to leave it in the first go. Eventually मेरा जो score था quant में I got 100 percentile because I had attempted all the questions. I knew that मैंने 95% of these questions सही कर दिए हैं. LRDI में I got 99.96. CAT again is an exam which is given to get those coveted IIM calls, right? So I knew कि even at 99.98 score I would get all the calls that I want eventually. At the end of this journey,
मेरा 99.98 परसेंटाइल आया था, एंड दैट्स व्हाई आई रिसीव्ड all the calls. So I received Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, and Indore as well. And I had appeared for FMS ka. I had filled the FMS form also, so I got a call from FMS as well. One thing that I understood during this process is कि आपको जो eventual call है, that depends on maybe your so there's some, let's say, weightage given to the CAT percentile that you score, right? But then there are other factors in play. For instance, अगर आप बैंगलोर का प्रोसेस उठाओ, then there is a weightage given to the 10th का बोर्ड का score, there is a weightage given to आपका 12th का score, and then graduation, and even so, for instance, in Ahmedabad, even the stream that, let's say, you took after your 12th, right? जो भी आप जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, when I started researching कि वो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, let's say how to prepare for these interviews, I eventually got to know कि हर एक IIM का जो प्रोसेस होता है, it's very 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 different from each other, and the reason is कि हर एक IIM का एक कल्चर है, and generally इस इंटरव्यू प्रोसेस में there is a representation from the alumni of that particular institute as well, and alum का काम ही ये होता है to check if, let's say, you are a cultural fit to that institute or not. IIMA का जो process है, that is, let's say, geared towards more academic, let's say you being let's say an academic prodigy. Bangalore का process is, let's say, geared towards understanding if you have been let's say a consistent academic performer right from your school days. Calcutta again looks for spikes. For instance, Calcutta wants कि आपने लाइफ में ना कुछ कभी कहाँ पे आपने मचाया है, मतलब you some place where you have really outshone others. मेरा अहमदाबाद का इंटरव्यू है, वो सबसे पहला इंटरव्यू था, एंड इट वॉज रियली, द इंटरव्यू स्टार्टेड वेल, वो पूरा इंटरव्यू नॉर्मल चल रहा था, बट देन देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो उनने मुझे पूछे, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट? सो इट वेंट इनटू कि रेडियो कैसे चलता है, हाउ, लेट्स से, हाउ डज फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा वर्क, एंड मैं उस वक्त मुझे हो गए थे 3 years, मतलब पासिंग आउट ऑफ द कैंपस, एंड electronics was not something that, let's say, I was very accustomed to. Okay, so let's say if you're someone who is struggling to decide which mock test series to take, you have a great option in Unacademy. They have great educators who have spent quite a lot of time in making these mock test series. The details would be in the description. Second मेरा जो interview था वो IIM Calcutta का था, and IIM Calcutta का interview again I understood कि मुझे यहाँ पे I need to be very well prepared with, let's say, my introduction, my life story, and I went there. वो interview, it was a very very good experience. हमने hobbies पे discussion किया. It went to great depths. मैंने mention किया था कि मैं literary fiction पढ़ रहा हूँ काफ़ी सालों से, and we went on very very different tangents कि why do people read literary fiction. Knew that I had aced Calcutta. Then it was my IIM Bangalore वाला इंटरव्यू डे. अगेन द इंटरव्यू प्रोसेस वो शुरू एक SOP से होता है दैट यू सबमिट एट बिफोर द इंटरव्यू. इट इज़ वेरी सिमिलर टू, लेट्स से, द GMAT प्रोसेस दैट लॉट ऑफ, लेट्स से, ग्लोबल B schools फॉलो. मैंने वो सबमिट किया था, एंड जो भी इंटरव्यू पैनल होता है ऑन दैट डे, दे जनरली रीड दैट SOP बिफोर यू कम इन. तो एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट I was presented was that why do I want to appear for the MBA, and I could immediately understand कि as an interview panel, right, the only thing that the interview panel cares about is to understand you as a person, see if, let's say, what kind of value you're going to add to this particular institute, right? One is the introduction. They should, let's say, and introduction में one should always let's say, discuss things about their life story, and especially the things that are, let's say, different from others. बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टेज में मॉक इंटरव्यूज़ में जाते हैं, एंड देन दे गेट अ लॉट ऑफ एडवाइस कि यार नहीं, ये चीज़ मतलब इंटरव्यू मत शेयर करना, दिस माइट बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक. बट आई ऑलवेज यूज टू से कि नहीं, यू, इफ लेट्स से यू हैव डन समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम, let's say, some other person, right, in your sphere, then you should mention it, because that uniqueness factor, right, that is something which will strike chord with the interview panel. And the reason that I discuss this is because IIMB में
वाले इंटरव्यू में दिस इज समथिंग दैट हैपेंड. मैं गया वहाँ पे. आई स्टार्टेड माई जो मेरा प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन था, आई स्टार्टेड विद दैट. वो इंट्रोडक्शन नॉर्मल जा रहा था, बट द एलम ही काइंड ऑफ इंटरजेक्टेड मी. सेड कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट रेगुलर स्टोरी. टेल मी व्हाट मेक्स लव टिक. आई मीन व्हाट आर योर एस्पिरेशंस. एंड दिस इज वेयर द इंटरव्यू वेंट इन अ वेरी डिफरेंट टैंजेंट. अगेन जो फिर प्रोसेस थे लखनऊ का वॉज वेरी सिमिलर टू ए. उसमें एक सेट पैटर्न होता है वेयर the interview panel asked you about your academic journey. There would be some questions on academics. There would be some questions on extracurriculars of things that are happening, let's say in the country, globally, burning issues. And then eventually जब वो खत्म होता है interview, they also ask about your hobbies. Very similar to what A does. कोई कोड का process was very surprising. मेरे टाइम पे एक GD भी हुआ करता था, तो I appeared for a GD. GD was good. उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, इट वॉज जस्ट अ 5 to 10 minute conversation. They just asked me a few questions on why I want to do an MBA, and it was it. In 10 minutes मेरा वो process खत्म हो गया था. I eventually did not appear for Indore and FMS. At the end of this interview process, I converted. So except A, I was shortlisted at A, which did not convert. I converted Bangalore, Calcutta, and all other campuses. Now I had a choice whether I want to, let's say, join IIM Bangalore or IIM Calcutta. IIM Bangalore एक campus है जहाँ पे you find people with little work experience. I was already someone who had spent close to 2 years working right before going for this MBA. So I immediately, for me, I mean the choice was very clear कि maybe Bangalore would be one campus where let's say I will find people generally with higher work experience, and this is where even the companies that come. So इसका एक important aspect ये होता है कि आपके बैच में लोग मतलब क्या करते हैं. उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो कंपनीज आते हैं कैंपस में फॉर प्लेसमेंट्स, दे हैव अ वेरी क्लियर एजेंडा. बिकॉज अ कंपनी, इफ इट इज लेट्स से कमिंग टू बैंगलोर, राइट, इट नोज इनहेरेंटली कि यार आई एम गोइंग देयर टू गेट लेट्स से मेच्योरिटी ऑफ थॉट. इवेंचुअली आई वेंट देयर एंड IIM Bangalore campus did not disappoint. It was probably again 2 very enriching years for me. जो फर्स्ट जनरली आप ये बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि हर एक बी स्कूल कैंपस में जो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, स्पेशली बिफोर आपके समर प्लेसमेंट्स, दे आर प्रॉब्ली द मोस्ट स्ट्रेसफुल. एंड द रीज़न बीइंग वन, एक तो एकेडमिकली इट्स वेरी पैक्ड बिकॉज यू आर प्रॉब्ली अटेंडिंग क्लासेस लेट्स से फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी है, जैसे आपको अपना CV प्रिपेयर करना है फॉर योर इवेंचुअल प्लेसमेंट, राइट, विच इज़ द probably the most important thing in those 2-3 months. Academically pressure बहुत ज़्यादा होता है because आप 3 months के एक ड्यूरेशन में आप literally 6-7 courses कर रहे हो. उसके बीच में quizzes भी होते हैं, exams होते हैं. उसके अलावा फिर और extra curricular activities होती हैं कैंपस में. For me, I found that my purpose of joining that B school was very clear. मैं जब अपने 2 years जॉब में था, I knew that I needed to, let's say, understand something which is beyond what I already know, right? तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे eventually अपनी कंपनी खोलनी है. अब कंपनी खोलने के लिए I cannot be, let's say, restricted to things that I already know. I need to maybe magnify my domain. I need to understand things beyond what I already know. That's why मैंने ज़्यादा marketing courses पे मैंने focus किया. I focused on human resource organization courses as well. And एक IIM Bangalore का एक one thing which let's say separates it from other campuses is the faculty is like great, because you'll find IIMB ki faculty, they are people who themselves have MBA from one of the global schools or have an MBA from IIM Ahmedabad or IIM Bangalore. One thing that I have not mentioned, IIMB एक ऐसा campus है which, because it sits in a city like Bangalore, right, which has a very vibrant startup culture. IIMB का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी पॉपुलर इन दीज फेयर्स, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन थिंग विच सेपरेट्स IIMB फ्रॉम अदर कैंपसेस. वहाँ पे द कैंपस हैज़ बीन, लेट्स से, ट्राइंग टू प्रमोट entrepreneurship for a lot of years now, and during my time it was so those were the years when we were still testing out, let's say, rolling out courses like entrepreneurship. I'll mention a couple of courses which were like very very different. एक था which was more like
बताना, मतलब उस कोर्स में बेसिकली बताया जाता था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, हाउ डू यू रियली थिंक अबाउट starting up your own company, what things do you need to keep in mind. IIM I got placed in JP Morgan in their quant trading department. अब जो उसके बाद जो मेरा जर्नी शुरू हुआ, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से एन एवरेज बी स्कूल स्टूडेंट. जनरली बी स्कूल्स में क्या होता है, people opt for either consulting finance roles predominantly because they are generally higher paying as compared to the other roles, and then there are marketing roles, and वहाँ पे भी there are few marquee companies जहाँ पे बच्चे जाते हैं. On an average हमारा जो एवरेज CTC जो मेरे टाइम पे था, इट वाज अराउंड 25 lakhs, and so consulting or finance में it used to be a little higher than the average, and then there were a few general management roles जहाँ पे the starting CTC was lower, but then eventually the growth trajectory was different compared to other jobs. So I started off in the finance domain. मैंने initially 2 years spend किए थे उस वाले role में to understand, let's say वो एक company वो trading strategies कैसे बनाते हैं. It was a maths heavy role, but eventually I was lucky because of the years that I had spent in IIM Bangalore. I could see things beyond finance, right? I could see कि यार ठीक है finance है, but eventually we are here to make a business, right? We are here to make revenue and eventual profits in this particular domain, and that really prompted me to go beyond what I was doing there. 2 साल मैंने spend किया, and now I joined Pocket FM again with, let's say, that dream of taking up that 0 to 1 journey again. During these years, one thing which really stood out was कि जो मेरा जॉब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था, इट जस्ट बिकेम एक्सपोनेंशियल. इससे पहले जब प्री MBA में इंजीनियरिंग के बाद जो मैंने जॉब किया था सिस्को, वहाँ पे दोज 2 years में मेरा बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, एंड even I was not satisfied with what was happening back then because I could see beyond the numbers, right? I could see things जैसे for instance कि एक टीम का ना कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए. नाउ इफ़ यू आर, लेट्स से, इफ समवन कम्स विद अ वेरी हाई IQ, दे माइट अंडरस्टैंड कि यार ये प्रॉब्लम को समझना कैसे है, इस प्रॉब्लम को इवेंचुअली सॉल्व कैसे करना है, बट देर आर लॉट ऑफ नुआंसेस दैट दिस पर्सन माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. टीम की डायनेमिक्स कैसे इफेक्ट करने हैं, राइट? आपको मे बी जो आपके सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपको एग्जैक्टली कैसे स्टोरी सेल करनी है, हाउ टू रैली a lot of people towards a particular cause and let's say get the most out of them. ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने eventually समझा कि ये सब चीज़ें ना स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं जाती हैं, and lot of these things do not come very naturally to a lot of people. Especially मेरे जो IIT में जो मेरे cohort था, right, the kind of people who were studying with me, they all came from a very, let's say, studious background, and these things might not have come very naturally to them. बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर, लेट्स से, स्टार्टिंग आउट इन अ पर्टिकुलर जॉब, राइट? इनिशियली आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप अपना काम कितने अच्छे से करते हैं. जब आप थोड़ा सा सीनियर पोजिशंस में जाते हैं, राइट, लेट्स से 4-5 years into a particular job, that's when you understand that there are things beyond the immediate work that you're doing that impact, let's say, your promotions, that impact the kind of value that you create for that particular company. And वो करने के लिए either that should come naturally to you, right? Inherently आप ज़्यादा ओनरशिप वाले इंसान हैं, या फिर inherently आपको immediately समझ में आता है कि लोगों को मुझे कैसे मैनेज करना है, वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज करनी है. अगर ऐसा नहीं होता है, then you should probably opt for, let's say, a course like MBA, right? Wherein within those two years आपको ये सब via different courses आपको बताया जाता है, and they almost become a muscle memory for you. So if let's say you are someone who is preparing for CAT right now, right? I would say कि one thing that you should really start thinking about is कि why do you really want to do this? I mean, why do you want to undertake this journey? And eventually आप MBA क्यों करना चाहते हो? That इस question के बारे में आपको अभी से सोचना पड़ेगा, and this will eventually inform you. Let's say आप एक बार कैट का प्रिपेयर करके परसेंटाइल ला के आपके पास कुछ कॉल्स आएंगे, राइट? उस इंटरव्यू प्रोसेस में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी क्लियर इन योर
thought process कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं. Let's say if you are someone who is still unsure if you want to appear for the MBA, right? I have just one thing in that respect. आप let's say आपका कुछ aspiration होगा in life, right? And that aspiration, if that aspiration is, let's say tomorrow if you want to lead a team, or let's say if you tomorrow you want to be basically be a CXO in one of the companies, or let's say if you want to start up, right? And if you feel that आज की date में there are certain things that do not come naturally to you. Let's say आपको maybe ये जैसे छोटी settings में आप लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लेट्स से अगर मैं आपको कुछ चीज़ बोल दूँ कि इस XYZ चीज़ को आपको लीड करना है, उसमें अगर आपको इनिशियली ये सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे इस मतलब पहले क्या करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, देन प्रॉब्ली MBA वुड बी वन थिंग दैट यू शुड कंसिडर परस्यूइंग, बिकॉज एज आई सेड बीइंग अ बिजनेस कोर्स, राइट, यहाँ पे the whole, let's say, emphasis of those 2 years is to groom you to be a business leader eventually. Thanks a lot. This was about my life story. एक मैंने आपको छोटा सा glimpse दिया है on, let's say, things that led to this journey and eventual things that I'm doing now, right? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो please like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to Unacademy Showcase channel.